Good morning, everybody. I am Akshita, and I'm a part of the innovations team, and I'm anchoring animal husbandry projects here at SELCO Foundation. I heartily welcome everybody to yet again another Climate Smart Solutions webinar series. And today we are going to discuss about the discuss poultry value chain. And today we are going to discuss about the poultry lighting systems for broiler and layer poultry. As a part of the discussion today, we have with us Mr. Anupam and one of the end users from Jharkhand's Gumla Poultry Cooperative Society. We will interact with them shortly. Before that, I'll just take you through the poultry value chain, why we are talking about the particular lighting solution. I request everybody to stay with us until the end of the session. I request Mr. Anupam also to stay with us until the end of the session so that we can take more questions from the audience members. Whenever you have questions, any queries, please drop those questions in the chat box. We'll take it once the session gets over. Thank you. So as you know, poultry is one of the most common and prevalent livelihoods practiced across India, irrespective of what, especially in the rural areas, irrespective of what the kind of livelihood is practiced, be it agri or allied or any other activity. Poultry is, people tend to have a small amount of chicken in their backyard or it might be 10, it might be 50, or some people might also be practicing poultry itself as a major source of income. In India, poultry can be looked at in two different ways. Poultry, which with desi birds, indigenous variety of birds which are reared in the backyard. And then we have genetically modified birds which are reared for specifically for meat purpose, called broiler chicken. And then there are poultry birds which are reared specifically for eggs, layer birds. Okay, the poultry farming can be divided into three categories: your desi chicken, broiler poultry, and layer poultry. And then along with it, people also tend to rear ducks and quails as a part of their practice, depending on the region, right? So, in the recent years, broiler poultry has gained significance, especially with the rural women, tribal women, especially for their continuous source of income as a secured source of income. Broiler poultry is reared in the contract farming method. We might have heard about with popular poultry giants like Wenko, like Suguna, who have developed genetically modified poultry birds, which grow faster, which with minimum feed conversion ratio, they grow faster. They tend to gain weight, and they're sold in the market within 30 to 45 days. And what this model, broiler poultry and layer poultry model, looks like is there's an entity which identifies women in the rural areas or farmers. The farmer is responsible for building the shed, and later chicks are supplied, feed is supplied, vaccination is supplied from the entity, poultry entity, and farmers get grower charges for the number of chicks that are reared. They have to attain a certain kg of weight. After that, the poultry entity takes it back, and farmers get grower charges. It might be starting from 7 rupees to 15 rupees. The grower charges varies from region to region. What kind of the FCR, the weight of the chicken, and the farmers get grower charges for it. And this is a sustainable and continuous source of income for a lot of farmers, because they're assured the entity assures them
this livelihood, right? End-to-end market linkage, forward and backward linkages are secured, and farmers continue to get grower charges. And this has gained significance in at least over a period of 20, 30 years now. And at SELCO Foundation, we are working with an organization entity called NSPDT, National Smallholder Poultry Development Trust, who is working with more than 15,000 tribal women across central part of India, and now they have started to work in the Northeast as well, where they are identifying tribal women, and they're helping them end to end in setting up the shed, in setting up the poultry unit, where women are given grower charges and the end to end backward linkages and everything is taken care of. So NSPDT is wholly and solely working with the tribal women in India. And with them, we started working way back in 2020, 2019, 2020. And since then, we have worked on multiple aspects of the poultry value chain, starting from lighting systems to cool roofs, to fans, to changing the infrastructure for better ventilation and other things. NSPDT and SELCO Foundation's partnership goes a long way. While we were interacting with these poultry farmers, especially the tribal population, we realized that there's more to do with poultry rearing birds. It is not just about rearing birds, but there are multiple aspects. Even a small light bulb, which we take most of the time, we just take for granted, plays a huge role in poultry rearing birds itself. So there are several problem statements that we identified. One, if the poultry, the main the main agenda of rearing broiler birds is for them to eat, gain weight, and they can be sold as quickly as possible, right? So for the broiler chicks to eat, they have to be active. And if there is no lighting facility in the poultry shed, these birds don't, they tend to relax. They're not active. Whatever they eat, it's not converted into good muscles. They don't gain weight, and there's like, it takes a longer period of time for them to gain optimal weight. Also, if there is no light, there can be rodent attacks. There can be theft. People, even the rearers, farmers, they don't know where the chicks are, where the feeding unit is, where the water trough is. So there are multiple problems associated with not having lack of proper lighting system. This earlier in the places where I have interacted, especially where I have interacted with NSPDT, women associated with NSPDT, we realized they used to use kerosene lamps, which could sometimes lit up the poultry farm. Birds could sustain injuries. After that, one of the other problem statements is also what optimal light should be provided. What lighting is a solution. That doesn't mean we end up putting 100 larger energy consuming bulbs, brighter bulbs, which do not serve any purpose. They provide lighting is available, but then it also turns to warm up the entire poultry shed, increasing the shed temperature. Already there is significant amount of temperature in the poultry shed due to ammonia accumulation if the ventilation system is not right. Lighting also, if you are using more than the required amount of lighting, it also tends to increase the poultry shed temperature. Recently, during my last visit to Mizoram, we interacted with some poultry farmers who were having like about 25 lights with like 100 candle bulbs, those giant bulbs which is used to lit up one single room. And the farmer was spending about 6,000 to 8,000 rupees just on the electricity bill. He thought the lights continuously would warm up the chicks and the poultry birds later, but it was not required at all. So a problem existed when there was lack of lighting. Problem also existed when the lighting was more, when it was not serving any purpose, but just burning a hole in the pocket of the farmers. So basis these, after having multiple interactions, we designed
solar-powered lighting system, optimal lighting, and based on the per square meter, how many birds are reared. Usually with NSPDT, the model is very simple, 500 birds or 1,000 birds. In other cases, the birds can go up to 1,000, 2,000, 3,000, sometimes 10,000 birds are also, like we have encountered end users who are rearing 10,000, 15,000 birds in Odisha and other places of Assam. So what we this is the solution that we please excuse me for the presentation, the some fonts have gone here and there, but this is the poultry solar powered poultry lighting system that it looks like this. For we recommend one poultry bird to be reared per square feet. So if there is 500 square feet of the area, 500 birds are recommended for broiler birds, which are reared for meat. And for layer poultry, a lot more space is required, and lumens also differs for a poultry, for a broiler poultry, where for meat the chickens are reared, lumens differ, and for layer poultry for eggs that also differs. And for layer birds, we also realized that simply lighting system, just keeping the light on throughout the day, throughout the night wouldn't make sense. Layer birds tend to lay eggs during the dark period. So there should be optimal amount of light and optimal amount of darkness for layer birds. So the lumens, the intensity of the light differs, and the area that is covered, one light covers, also differs for layer poultry. And this is the standard design that we have uh, prepared. For the basic, it starts from 5 watt bulbs, three quantity of bulbs of 5 watt intensity. It can be installed in 500 square feet of land, and it is 7 watt for layer birds. And depending on the shed height, the lumens, it might vary. And here is the solar design associated with it and the cost of the unit. When we are, the poultry solution is a scalable solution now with NSPDT and other entities across Jharkhand, Odisha, Assam, some parts of Karnataka. We have scaled the solutions, and people if 500, the same design can be replicated for the increasing number of birds. So this is the solar design. My colleague Supriya will be taking you through the business models at the end of the session. So what has been the impact of these solutions is that farmers, as simple, the lighting system is fairly simple. There's no special skill required to operate the solution. Farmers, in also earlier cases where farmers had to rely on electricity to run the lights in the poultry system, they don't have to rely on grid supply now, intermittent grid supply. If there is rainfall, if there is any other untoward action, weather conditions, farmers can be assured that there is lighting system throughout. Poultry birds are active, they're eating well, FCR is maintained. When the light is there, they're continuously active, roaming here and there. And again, the lighting is optimal, it doesn't heat the shed up. So poultry birds are active, they're eating more, and there is significant optimal weight gain at the end of 30 to 35 days, depending on the area where they are reared, and depending on the selling practices, the kg of bird that is sold ultimately changes. Here in Madhya Pradesh and Jharkhand, Odisha, they sold up after a chicken achieves 1.2, 1.5 kgs. In Northeast, we have seen that chickens are sold after they gain about 2 kgs of weight. So depending on the regions, the practices changes, and depending on the size of the chicken that needs to be achieved, the rearing period also changes. So this is the standard design, and the impact has been simple. There is optimal FCR. There's weight gain. Mortality also reduces in the dark. Chicken would pile up one on other. They would harm each other. That is also reduced. So mortality, significant mortality, reduction in the mortality, and active birds, optimal weight gain. And farmers' electricity bill also
will have reduced. Some farmers used to pay like 6,000, 8,000 rupees electricity bill. Now it has significantly reduced. This is one of the champion stories that I wanted to share with everybody. I will not take much time. Uh, this is Mrs. Lakshmi Bai Gond from Madhya Pradesh, Sagar district. This is an entirely tribal belt consisting of Gond tribe women. They have land, but it's not suitable for irrigation. They were not able to grow anything, cultivate any kind of crop. Each of the women, each of the families had 2 acres, 3 acres, 5 acres of land, but it was not being used. They did not have access to clean water for them to do any other livelihood practices. Men of the family were solely dependent on daily wage labor, and women used to tend to livestock here and there. But after working with NSPDT, these about 2,000, 3,000 women in the area started rearing poultry birds. These women also tend to take a break and go to their relatives' place or other places, in a particular year. A particular time of the year. Their major problem was that lack of grid supply. Uh, Lighting would be available only until their home, and if they had to connect it to any of the poultry farms, again they had to take commercial line. It was very expensive. It was unreliable. The poultry sheds were far from the house, and they wouldn't know what is happening in the poultry farm. All of these women were rearing about 500 birds. And many among the community. Um, these once solar powered lights were introduced, the rearing cycle reduced from 45 days to 35 days, and they were able to have another cycle of poultry rearing activity. If they were doing 4 cycles in a year, they were able to add one more cycle because the rearing period decreased. And the lighting system brought a significant change in her life. She was able to increase the bird size from 500 to 1,000, and later more. She was able to expand it because earlier they did not have lights. They had to rely on kerosene, and now they were able to the community, the farmer community, where they were able to get additional income by the end of another cycle. And that gave them the confidence to expand their poultry business. So a simple lighting system could bring about a significant change in a farmer's life. So there are many more farmers associated, like farmers like Lakshmi Bai Gond in across the country. I will stop here, and I will request Purnima Devi ji to speak about her experience. वो कितने दिनों से poultry farming चला रहे हैं. I request Anupam ji to facilitate this conversation. अनुपम जी, आप अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज. अभी ठीक है मैम सबको. हाँ. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. नमस्ते पूर्णिमा जी और अनुपम जी. हाँ. जस्ट अ क्वेश्चन, वीडियो दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है. ओके. पूर्णिमा जी, बताइए आप कितने दिनों से मुर्गी पालन कर रहे हैं, क्यों आपने स्टार्ट किया, एनएसपीडीटी के साथ आप कैसे जुड़ गए? मैम, हम लोग ना 2001 में महिला समूह का गठन किए हैं और 2002 में पोल्ट्री का शुरुआत किए. और हम लोग उस टाइम चूजा को लाइट देने के लिए राशन दुकान से मिट्टी तेल मिल रहा था. हम लोग उसी से लाइट दे रहे थे चूजा को. फिर
खत्म होने के बाद हम लोग एक 5 लीटर का सिलेंडर हम लोग भरा के लाइट देते थे चूजा को। और आज के दिन में हम लोग को सेल्को फाउंडेशन के माध्यम से लाइट मिला। हम लोग को बहुत अच्छा, बहुत हम लोग को मतलब कितनों भी बारिश हो, कितनों भी मतलब तूफान हो, लाइट के लिए समस्या नहीं है। और हम लोग का बहुत ही बदलाव हो गया है मुर्गी पालन में। लाइट चकाचक लाइट रहता है रात में, तो मुर्गा अच्छा से मतलब दाना पानी मतलब खा लेता है, और जितना वजन होना चाहिए उतना हो जाता है। तो हम लोग को पहले से बहुत ही सुधार हो गया है, बहुत अच्छा है, हम लोग खुश हैं। लाइट का सुविधा मिल गया तो हम लोग सभी दीदी बहुत खुश हैं। और दीदी लोग के लिए भी पूरा नहीं हुआ है लाइट। हम लोग लाइट मांग किए हैं, हम लोग का गुमला कोऑपरेटिव के लिए 200 के लिए हम लोग का जरूरत है। तो 200 मतलब आप लोग देने का कृपा करेंगे। हम लोग बहुत अच्छा से मुर्गा पालन करेंगे। और हमारे जो सर हैं, सर भी बात करेंगे आप लोग से। और मैं लाइट के लिए आप लोग को बहुत ही अच्छा सुविधा दिए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोग को। धन्यवाद। सर है। धन्यवाद। मुझे और दो सवाल था। पहले आप जब बोल रहे थे केरोसिन यूज करते थे, तो अ, चूजा मर जाने का कुछ रहता था, ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ था, या फिर क्या दिक्कत आती थी तभी? पहले मतलब जो मिट्टी तेल से हम लोग लाइट दे के चूजा पाल रहे थे, तो दब के भी मर जाता था, काहे कि लाइट तो बुझ जाता था रात में, कभी मतलब हवा आ गया, पानी आ गया, तो मतलब बुझ जाता था। फिर हम लोग उठ के फिर से दोबारा हम लोग जलाते थे, तब तक के लिए चूजा का मोटिलिटी हो जाता था। और बीमारी भी होता था उस टाइम। हम्म। बीमारी एसाइटिस एसाइटिस पहले बहुत ज्यादा ही होता था। एक वही मतलब बीमारी उस टाइम ज्यादा रहता था, दब के मरने वाला, और एक एसाइटिस बीमारी। अच्छा। आप ओजन कितने बहुत पड़ा था पहले, काहे कि रात में लाइट का समस्या था। ये सोलर लाइट कब लगाया था गुमला में? काफी साल हो गया ना? 5 साल तो हो गया होगा। साल हो गया। हाँ हाँ। सो तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है? अ, नहीं, अच्छा। नहीं है, अभी के लिए दिक्कत नहीं है। आप बहुत लाइट रहता है रात में। वजन कितना बढ़ता है अभी? कितने दिन के बाद आप मुर्गा बेचते हैं, मुर्गी बेचते हैं? मुर्गी 32 दिन 33 दिन में हम लोग का 2 केजी से ऊपर हो जाता है। अच्छा, ओके ओके। अम, तो मोर्टालिटी अभी कितना है? मोटिलिटी अभी बहुत ही कम है। मतलब 500 चूजा पालते हैं तो 25-30 इतना तो हो ही जाता है। ओके, ठीक है। अब आप कितने दीदी है गुमला कोऑपरेटिव सोसाइटी में अभी? कुमला कोऑपरेटिव ने हम लोग 1154 सदस्य हैं। अच्छा, ओके। और लगभग 20 साल हो गया आपको मुर्गी पालन करते हुए ना? हाँ। अच्छा है। अच्छा। आप गुमला पोल्ट्री सोसाइटी का तो हम हर लोग, हाँ, जब भी हम पोल्ट्री के बारे में बात करते हैं सबको एग्जाम्पल देते हैं। गुमला हो गया, केसला हो गया, ये दो बहुत पहले शुरुआत किया था ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर पोल्ट्री। वो और गुमला का मॉडल भी बहुत अच्छा है। मैंने ये भी सुना था कि आप हर महीने कुछ पैसे अलग से रखते थे, ताकि कोई भी मशीन खराब हो गया, बैटरी खराब हो गया, तो उसके लिए वो ठीक कराने के लिए काम आ जाए। वो भी मॉडल बहुत अच्छा है। वो हम हर जगह वो रेप्लिकेट भी करना चाहिए। हर दीदी लोगों को वो ऐसा मॉडल फॉलो करना चाहिए। आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? हम लोग एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाए हैं, उसमें ये सॉरी मैम, जस्ट टू थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे वो हैं। है। हाँ ये बात कर रही है सोशल सिक्योरिटी फंड का, ये अलग हाँ है। साथ में हाँ। सोलर फंड, सोलर 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 फंड है। फंड के बाद सोलर फंड मतलब 200 करके करते हैं 300 सर, 300। 300 है ना। सोलर के लिए 300 मतलब हर बैच हम्म। जमा करते हैं। अच्छा। अभी तक वो जमा किया हुआ रकम इस्तेमाल हुआ है ना, वो ठीक कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए, कुछ भी? अच्छा। वो आप सोशल सिक्योरिटी का फंड के बारे में बता रहे थे, वो क्या है?
सोशल सिक्योरिटी फंड हम लोग बनाए हैं। सभी सदस्य का बैज में 100 रुपया हम लोग जमा करते हैं और उस पैसे से हम लोग किसी का मतलब आकस्मिक छत का मतलब घटना हो जाता है, छत में गिरने मतलब तूफान आ गया तो अल्बेस्टर उड़ गया, टूट गया, तो उसमें हम लोग सहयोग करते हैं इधर से। या तो किसी दीदी का मतलब तबीयत खराब हो गया बहुत ज्यादा, दिखा के वो लोग मतलब थक गए, वैसा दीदी लोग को हम लोग सहयोग करते हैं इधर से। और हम लोग का बीमा है, बीमा के तरफ से 50 साल से नीचे वालों नहीं 60 साल से नीचे वालों के लिए बीमा कंपनी से हम लोग को क्लेम दिया जाता है, और 60 साल से ऊपर वालों के लिए हम लोग समिति की तरफ से 30,000 का हम लोग सहयोग करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है ऐसा। लाइक बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने सुना नहीं है ऐसे ऐसे फंड्स हर महीने अलग से रखना और उसका इस्तेमाल अच्छे अच्छे चीजों के लिए करना। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप रुकिए हमारे साथ, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगी क्या है। अ, अनुपम सर। मैम। हाँ, आप गुमला पोल्ट्री कोऑपरेटिव के बारे में कुछ बताइए। कितने सालों से आप जुड़े हैं, और लाइटिंग के बारे में भी बताइए। आपका राय क्या है? सबसे पहले मैं छोटा सा एक परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अनुपम कुमार हुआ और मैं झारखंड पोल्ट्री फेडरेशन से लगभग 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और विभिन्न लोकेशन में काम किया हूँ झारखंड के अंदर। इसमें अभी फिलहाल मैं गुमला में एज ए मैनेजर कार्यरत हूँ। गुमला कोऑपरेटिव का मैम गठन हुआ था 2002 में। मात्र 9 सदस्यों मिलकर, 9 महिला सदस्य मिलकर कोऑपरेटिव का शुरुआत किए थे। और आज के दिन में मैम 1154 महिलाएं जुड़कर मुर्गी पालन का कार्य कर रही हैं। लास्ट ईयर 2024-25 25-26 का बात करें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। लगभग समिति 35 करोड़ रुपया का व्यवसाय किया है गुमला समिति। ओके। तो काफी अच्छा रहा है। साथ में व्यवसाय करने के बाद जो दीदी लोग के बीच में ग्रोअर चार्ज का भुगतान हुआ है, लगभग 3 करोड़ 21 लाख रुपया का भुगतान हुआ है दीदी लोग के बीच में। और बावजूद इसके लगभग 70 लाख रुपया कोऑपरेटिव को इस वर्ष 25-26 में फायदा हुआ है। इतना देने के बाद, सारा एडमिन खर्च करने के बाद 70 लाख रुपया लगभग प्रॉफिट भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो कोविड का जो लॉस था हम्म। वो मैनेज करने में आसानी हुआ है। अच्छा। अब सोलर लाइट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं 2017 में ज्वाइन किया था दुमका समिति में। उस समय मतलब हम लोग का जो आधा काम जो प्रोडक्शन इंचार्ज हमने ज्वाइन किया था, सारा फार्म का मॉनिटरिंग करना पूरा जिम्मेवारी उस समय था। तो आधा समय हम लोग लाइट है कि नहीं है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, क्योंकि अ, जब तक लाइट नहीं रहेगा मैम फीड कंजम्पशन होगा ही। लाइट नहीं रहेगा मैम, अर्ली जो डे ओल्ड चिक्स होता है उसमें ब्रूडिंग किया जाता है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो पाइलिंग मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होता था। वो बहुत सारे एग्जांपल्स भी है। लगभग 500 के फार्म में 250 चूजे एक दिन में मर जाते थे। ऐसा उस समय बहुत सारे केसेस आए। तो अ, फिर सोचा कि चलो चार्जिंग बल्ब लगा देते हैं, बट उसके लिए भी कमर्शियल कनेक्शन लेना होगा, जो कि 500 के फार्म में लेना लगभग इम्पॉसिबल जैसा था। और उसमें भी अगर ले भी लिए तो कितना देर रहेगा लाइट, उस पे एक अलग ही क्वेश्चन मार्क था। तो उस समय का स्थिति को देखते हुए मैं जितना जान रहा हूँ लगभग 19 या 20 के आसपास ये सोलर का काम शुरू हुआ था, 20 या 21 के आसपास, जिसमें गुमला से ही शुरुआत हुआ था। तो आज के दिन में मैम जब भी मैं जाता हूँ तो कम से कम ये इस चीज का कभी टेंशन नहीं रहता है कि रात में लाइट रहेगा कि नहीं हम्म। रहेगा, मतलब हमेशा चलेगा ये तो श्योर है। हम्म। बीच बीच में कुछ कुछ खराबियां आती है, जैसा कि दीदी बता रही थी कि सोलर फंड एक अलग से क्रिएट किया हुआ है। वो रिवॉल्विंग फंड के रूप में हम लोग करेक्ट। ये किए। हम्म। तो हर बैच 300 रुपया
अगर बढ़िया फायदा हुआ तो 300, कभी कभी नहीं होता है तो कोई मेंबर चलो बाद में जमा कर देना, कोई फोर्सफुली बोल करके नहीं है, बट 300 रुपये हर बैच हम लोग जमा करते हैं। आज के दिन में मैम फंड का राशि देखिए तो लगभग 8 लाख रुपया का अभी सोलर फंड क्रिएट किया हुआ है। ओके। बीच बीच में कई खर्चे भी हुए हैं, लाइक माइनस भी है, बल्ब होल्डर, ये सब। हमने एक और चीज प्रमोट किया है यहाँ अपने एंड में। पहले कुछ भी खराबी हो जाने से तो पहले 1 साल का वारंटी था, वो लोग आकर के बना लेते थे। फिर बीच में क्या हुआ कि कोई स्पेशल टेक्निकल पर्सन आते थे बनाने के लिए। मैंने अपना ही एक स्टाफ को एक ट्रेनिंग दिलवा दिया, आज के दिन में वो खुद जा कर करके अपना काम करते हुए खुद जा करके वो उसका रिपेयरिंग कर देते हैं। जो भी खर्च होता है वो माइनर खर्च यहाँ सोसाइटी से बेयर कर दिया जाता है। तो आज के दिन में बहुत खुशी है मैम। हम तो अभी बात कर रहे थे, अभी एज ए गुमला दीदी बताई 200 सोलर लाइट का जरूरत है, बट एज ए झारखंड फेडरेशन लगभग अभी ऐसे 500 से 600 दीदी हैं जिनके पास अभी भी सोलर लाइट नहीं है। अच्छा। और आज के दिन में वो लोग फोन करते हैं, मैं लोहरदगा का भी चार्ज में हूँ, वहां से भी फोन आता है कि कब हम लोग को मिलेगा। बट ये अच्छा। कॉस्ट इतना हाई है कि मेंबर बेयर नहीं कर पाती है, लगभग 18 रुपए की कॉस्टिंग है। करेक्ट। तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज रेट पे मिलने से उनको आसानी होगा। अच्छा। अब क्वेश्चन। अ, आप मुझे एक्चुअली हम कहा जहाँ पे भी ये पोल्ट्री के बारे में बात करते हैं, वन वन अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आप हर विलेज में जितने भी महिलाएं हैं, दीदी जुड़े हैं, उनमें से एक महिला वो सबका बुक कीपिंग करती है, वो जाके चूजे का या फिर मुर्गी का ख्याल कैसे रख रहे हैं वो सब देखती है, डे टू डे रिकॉर्ड वो बनाते हैं। ये ऐसा मॉडल हर ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में नहीं होता है। आप उसके बारे में बताइए थोड़ा कि ट्रेनिंग कैसे देते हैं वो। ठीक है मैम, एक्चुअली हमारा वो सिस्टम में ही इनबिल्ट है कि हर विलेज में एक विलेज लेवल सुपरवाइजर होते हैं। अब मेरे को यह बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अगर अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ मैम, लगभग 35 करोड़ रुपए सालाना का व्यवसाय हो रहा है, लगभग 3 करोड़ रुपए मंथली का व्यवसाय हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक एक मुर्गी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उस फार्म में क्या दिक्कत है, मैं यहीं से जानता हूँ, क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। करेक्ट। हर गांव में एक विलेज लेवल सुपरवाइजर होते हैं जो कि लगभग 20 से 25 मेंबर का वो पूरा का पूरा ब्यौरा रखते हैं। हर दिन उनके फार्म में जाना, क्या मोर्टेलिटी है उसको पोस्टमार्टम करना, जिन क्या डिजीज है, अगर डिजीज डायग्नोसिस वो कर ली है तो ठीक है, वो ट्रीटमेंट की ओर जाती है। डायग्नोस नहीं हुआ देन हमारा टेक्निकल टीम है, वो जाते हैं फील्ड में, देन वो डायग्नोस करते हैं। करेक्ट। तो ये सारा वो जो विलेज लेवल सुपरवाइजर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, जब तक कि सेल ना हो और आफ्टर सेल भी जब तक जीसी पेमेंट ना हो, वो लगे रहते हैं। करेक्ट। इसके लिए हमारा जो है हर वीक सुपरवाइजर मीटिंग होता है ऑफिस में, जो कि 30 से 31 सुपरवाइजर आते हैं, कलेक्टिवली यहाँ बैठते हैं, क्या नई चीजें हैं वो सीखते हैं, टेक्निकल चीजें, फिर जाकर के वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सुपरवाइजर बनाने से पहले उनको अलग 1 महीना का ट्रेनिंग दिया जाता है विलेज लेवल में, या तो इसी सोसाइटी में कोई और विलेज में, या तो दूसरे सोसाइटी में भी भेज दिया जाता है, जो कि फुल्ली रेसिडेंशियल रहता है। वो 35 दिन पूरा का पूरा उसके काम को ऑब्जर्व करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली ये सिस्टम में इनबिल्ट है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा आपको आपसे बात करके। अ, जस्ट सॉरी ऐड करते हैं, बोलिए। क्योंकि हम बराबर फोन आ रहे हैं, लाइक जैसे हमने बोला कि लोहरदगा टूरू जो हमारा सोसाइटी है, वहाँ से भी आई थिंक 1 सप्ताह पहले ही फोन आया है। अच्छा। ऐसे और है, लाइक पेटरवार है, कोटका है, पटमदा है, गोड्डा है, दुमका है और तोरपा है। तो लगभग कई जगह से फोन कॉल्स आते हैं कि बाकी जो बचा हुआ है वो हमें कब मिलेगा। तो और
बिहाफ ऑफ झारखंड फेडरेशन हम चाहते हैं कि इस पे भी एक बार सेल्को फाउंडेशन विचार करे कि कैसे और 600 महिलाओं को सोलर लाइटिंग दिया जाए। ठीक है, जरूर मैं बात करूंगी अपने टीम से। पहले अखिलेश जी भी शायद यही बात पे डिस्कस करने वाले थे हमारे साथ। मैं आई गेट बैक टू यू सून, टीम से एक बार बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीदी। I now request my colleague Supriya to just take us through the business models. Hello everyone, my name is Supriya and I'll walk you through the business model for the poultry lighting. So this is how the capital costs look. The solar lighting and the solar system roughly amounts to about 18,000. But then again, it depends on the area size. The bigger the area, the more number of lighting would be required. And if in case the entrepreneur is availing a loan, say for about 80% of the capex and 20% as the margin amount, then the loan contribution would be 14,400, and it would then be for a rate of interest of 12%, and the tenure can be shorter because the capex is considerably lower amount. So we have considered it as 2 years. You can always increase the period of years or the period of months based on your flexibility. So if you consider this particular tenure for 24 months, the EMI would be around 678 rupees per month. Next. So this is how the pre-intervention and the post-intervention looks. The number of days per batch, our current end user also said, that it is roughly about 33 to 35 days. So we have considered 35 days per batch. And number of chicks in a batch, we have considered it to be as 400. So the mortality rate was seen that before the intervention it was higher, about 10%, and post-intervention it drastically reduced to 1%. So the increase in the number of chicks per batch in this case was roughly about 66 chicks increase post intervention. And per year the batches is 6. That is because they also keep a buffer of 15 days after every batch, wherein they do the deep cleaning and the area prep before they start incubating the next batch. And the selling price is in terms of kgs, that is 120 to 140 rupees per kg. And the average weight per chick is, we have considered it to be 1.7. It also goes up to 2 kg per chick, like our end user also just mentioned a while ago. So the total live weight per batch in this case, pre-intervention it is 612. Post-intervention, because the mortality rate went low, it is increased up to 673 kgs per batch. So the income per batch remains 73,414 pre-intervention. Post-intervention it is increased because of the 66 number increase in the post-intervention batch. So the additional annual income per annum
that the end user would be making now would be 44,064 rupees because of the low mortality rate. Next. So the raw material cost, there are different types of feed that is given for a span of 35 days. Say for example, from the starting day 1 to day 10, a pre-starter feed is given, and then from day 10 to day 21, starter feed, and then the finisher feed. That is how you get your feed conversion ratio as well, like Akshita had discussed earlier. So the all the raw material cost for the 400 number of cheeks, with per cheek being 40 rupees as the input cost, would amount for 49,300 per batch, including the medicine and the vaccination, and the amount per annum would be 2,95,800. This is for 400 number of cheeks. This will definitely vary with the number of cheeks that you are incubating. Next. So the annual expense, like the raw material, like it was discussed in the earlier slide, it is the same. So per year it would amount to this much, and 1,90,800. And the electricity cost earlier was 48,000. After the intervention, it is nil. So the saving again, the end user that the end user would be making is 48,000 additional in addition to the decrease in the mortality rate and the increase in the number of chicks by the end of the batch. So this is the another additional income that the end user will be making, that is savings on the electricity. And medicine and vaccination remains the same for per annum, that is 9,000. So then again, the savings is 48,000 with respect to the expense. Next. So the total annual revenue is 4,84,000. With the when you account for all the annual expenses, it is 1,99,000. You're left with an operating profit of 2,84,000. And if you deduce the annual EMI of 8,000, the end user is left with a net profit of 2,76,000, with a payback period of like very minimal, that is 0.2 years, which is hardly 2.5. Thank you. Over to Akshita. Um, we have got some questions. Um, uh, so we have a few questions. एक के बाद एक लेंगे. Why is it like this? Kiran Kumar has a question. Is it not a burden to farmers for electricity cost while running long hours? Yes, in the absence of solar system, we have interacted in some of the cases, at least in some of the cases I have visited in Assam and other regions. I was horrified to see one poultry farm where they had nearly used 100 bulbs. The entire shed was lined with multiple bulbs, and people were not able to understand what is the optimum lumens that are required. What height should you place the bulbs for them to be effective? This so it and when you're practicing it in unscientific manner, of course it becomes a huge burden. 6 to 8,000 just for lights it's a huge deal for poultry farmers, especially when they're relying on the grower charges, and each bird's mortality, each bird dying would make a dent in their pocket. So definitely that becomes a burden for farmers. Does heat increase stress among birds? Definitely. If I have learned about poultry rating after interacting with a lot of farmers, and every time the the temperature outside increases, the shed temperature also tends to increase inside. There's a lot of ammonia also because of the waste that is generated, poultry droppings.
And if the ventilation is not proper, if the heat increases, poultry birds tend to die. ये अनुपम कुमार भी अनुपम जी भी हमें बता सकते हैं कि हीट स्ट्रेस के वजह से मोर्टेलिटी कितना होता है, कैसे होता है वो। मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहती हूँ। अनुपम जी, आपने देखा है क्या चूजा और मुर्गी मरते हुए हीट स्ट्रेस के वजह से? कैसे मरता है? झारखंड में भी ये होता होगा। अनुपम जी। अनुपम जी। हाँ, हाँ। ओके। एक्चुअली कुछ सवाल था, लोग ये पूछ रहे थे कि हीट स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हीट स्ट्रेस होता है क्या पोल्ट्री बर्ड को? अ, चूजा मुर्गा। मैम अभी अ, अच्छा क्वेश्चन है मैम। क्योंकि अभी गर्मी का ही मौसम चल रहा है, तो अच्छा खासा लगभग जब भी टेम्परेचर मोर देन 42 43 अगर जाने लगते हैं, तो मुर्गियों में हीट स्ट्रेस बहुत ज्यादा होते हैं। लाइक उससे मोर्टेलिटी का जो केसेस है, अगर हीट स्ट्रेस हुआ तो कहीं ना कहीं 500 का फार्म जो है, और प्राय बिग बर्ड में होता है, हम्म। एबव 1 किलो, एबव 1.5, 1.7, 2 प्लस, तो एक एक बार में 50 100 इस टाइप से मोर्टेलिटी होते हैं। अभी हम्म। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, जैसे पूर्णिमा दी है, पूर्णिमा दी का शेड में हीट स्ट्रेस का कभी समस्या आया ही नहीं। हम्म। कारण यह है कि इनका रूफिंग लगा हुआ अच्छा, हाँ। है, सोलर रूफिंग, सोलर सॉरी, ये एक कूल रूफ सिस्टम्स। हाँ, हाँ। एसी सीट लगाया गया। इनका कभी केसेस नहीं आया। ऐसे हम्म। ऐसे और भी लगभग 8 10 जगह लगे हैं, उनमें कभी नहीं हीट स्ट्रेस का ये आया है। तो हम लोग बात भी कर रहे थे कि क्या और इस पे एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या क्या कॉस्टिंग है, नहीं है। तो हीट स्ट्रेस का बहुत ज्यादा रोल होता है मैम। अभी नहीं है कहीं कहीं जो रूफिंग है, उस केस में हम लोग झमड़ा वगैरह बनाते हैं। झमड़ा मतलब पुआल जो होता है, धान का पुआल जो होता है धान हम्म। निकलने के बाद, वो शेड के ऊपर डाल देते हैं, साइड में थैचिंग कर देते हैं। तो उस तरीके से हम लोग अभी बचा पा रहे हैं कुछ, बट फिर भी पूरा नहीं बचा पाते। अब 3 दिन पहले ही हमारे यहाँ हीट स्ट्रेस से मोर्टेलिटी हुआ है। लगभग 20 फार्म था, जिसमें से 6 फार्म में ऐसा हुआ, लगभग 200 पीस मोर्टेलिटी हुआ। 200 पीस का कॉस्टिंग लगभग 40,000 रुपया होते हैं मैम। पर करेक्ट। बर्ड हमारा हाँ। लगभग 200 से 210 रुपया कॉस्टिंग है। हम्म। मोर्टेलिटी हुए। हैचिंग के साथ मैम दूसरा ये भी समस्या है कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, पता चला शाम में तूफान आ गया, हम्म। वो सारा थैचिंग लेकर के उड़ जाता है। फिर से उसको बनाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब वो करेक्ट। लगभग 4 5 दिन के बाद रोटेशन हो ही जाता है। हम्म। पर फिर भी हम लोग समाउ मैनेज कर रहे हैं इसको, हम्म। कि ताकि हमारा हीट स्ट्रेस ना हो। बट ओके। ये बहुत मेजर मेजर समस्या है हीट स्ट्रेस का आज के दिन में। लोग मुझे लोगों को हैरानी होती है जब हम बोलते हैं कि गाय हो गया, मुर्गी हो गया, इवन पिग्स हो गए, मछली में भी ये हीट स्ट्रेस दिखता है। तो हम अपने घर में जब भी बाहर गर्मी बढ़ जाती है तो हमें दिक्कत होती है, पर एनिमल्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो बताते नहीं है। ऐसे बहुत अलग अलग साइंस होते हैं जिससे पता चलता है। गायों में वो दूध देना कम कर देती है, इवन पिग्स दे वो खाना खाना बंद कर देते हैं, इवन चिकन दे टेंड टू डाई। वो जमीन पे बैठ जाते हैं और सांस लेने की कोशिश करते हैं। पूरा बहुत जोर से पैंटिंग करते हैं। हाँ, हाँ। रेगुलेटरी प्रोसेस है नहीं, हमारा जो चिकन होता है पसीने आने का कुछ है ही नहीं करेक्ट। उसका। हम्म। तो मिल्क से जो पेंटिंग करते हैं, उसी से हम्म। पता चलता है। प्लस हाँ। खाना पीना बंद कर देते हैं, एक ही जगह पड़े रहना, ये हमारा मुर्गियों में ऐसा करेक्ट, सिम्टम। करेक्ट। हाँ, वो सिम्टम दिख जाता है कितने जगहों पे। मैंने खुद देखा है अपने आंखों के सामने कि मुर्गी मर गया गर्मी के वजह से बहुत ऐसे। हाँ, दैट्स आल्सो वन थिंग। यहाँ पे गुमला में कितने साइकिल्स करते हैं? हमारे एक और सवाल था, एंथनी जी पूछ रहे थे कि साल में कितना साइकिल्स करते हैं? हम लोग
नॉर्मली मैम कम से कम 7 का प्लान करते हैं, हम्म। लेकिन कभी कभी 7 नहीं भी होता है, लेकिन मिनिमम 6 बैच तो जरूर ओके। होता है। हम्म। कम से कम 6, 6:30 तक भी पहुंच जाता है। हम्म। 7 करने का एकदम प्रयास रहता है बिग ओके। बर्ड में। अगर स्मॉल बर्ड करे तो लगभग 8 से 8:30 बैच करने का हम लोग का प्लान होता है, क्योंकि आज के दिन में मैम स्मॉल बर्ड का 24 दिन ही उसका एज है, हम्म। मतलब रखने का। और हम्म। बिग बर्ड का लगभग 32 से 34 दिन। दिन 10 दिन प्रिपरेशन में जाते हैं, देन फिर सेकंड प्लेसमेंट ओके। के साथ कर सकते और ये भी सवाल कर रहे थे कि स्टैंडर्ड फीडिंग सिस्टम में स्टैंडर्ड है क्या, कितना केजी दान देते हैं हर रोज चिकन को? वो डिफर होता है स्टार्टर, ग्रोअर, फिनिशर। तो आप एवरेज बता सकते हैं। हैं? हमारा एक स्टैंडर्ड चार्ट है पर डे के बेसिस पे। अभी मेरे को याद नहीं कि हर दिन का वो बना हुआ है कि हर दिन आज के दिन में अगर 14 दिन हुआ है तो इतना फीड खाएगा, बट हम लोग स्टैंडर्ड जैसा कि हमने बताया कि हमारा वीकली मीटिंग ऑफिस में होता है, तो उसमें हर सुपरवाइजर हर वीक का एक रिपोर्ट रिकॉर्ड कीपिंग करके यहाँ पे लाते हैं रिपोर्ट। तो उसमें 7 दिन का अगर बर्ड है किसी किन्हीं के पास, हम लोग 7, 14, 21, 28, 35 इस प्रकार से रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। तो 7 दिन का अगर बर्ड है तो कम से कम आज के दिन में 220 ग्राम होना चाहिए बर्ड ओके। का बॉडी वेट। और एफसीआर जो है, जो अभी ये बता रहे थे कितना फीड खाना है, फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं 0.75 होना चाहिए। मोर्टेलिटी 0.5 टू 0.25% हार्डली। ये 7 दिन का हमारा स्टैंडर्ड है। 14 दिन का स्टैंडर्ड है आज के दिन में 550 ग्राम, 550 ग्राम बॉडी वेट। एफसीआर 0.9। और मोर्टेलिटी हार्ट टू हार्ट 0.75। ये स्टैंडर्ड हम लोग बना करके रखे हैं। और कहीं ना कहीं पोल्ट्री का भी स्टैंडर्ड है। 21 डेज में आज के दिन में हमारा हो गया है 1.1 kg स्टैंडर्ड, जो कि आज से 6 साल पहले 800, 850 ग्राम आते थे। आज का स्टैंडर्ड 1 किलो। एफसीआर करेक्ट। जो है 1.1, मतलब 1 किलो 100 दाना खा करके 1 kg बॉडी वेट। हाँ। और 28 दिन का हमारा है आज के दिन में लगभग 1.65 स्टैंडर्ड, 28 डेज। और 32 डेज में 2 किलो। तो जो पूछते हैं कि कितना दाना खिला करके, तो 2 kg बॉडी वेट लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारा स्टैंडर्ड है 2 किलो 800 ग्राम दाना खिलाएंगे। एफसीआर 1.4 होगा, 2 किलो बॉडी वेट उसमें आना ओके। ठीक है। थैंक यू। Mr. Anthony also had one more question. ADD lighting per square feet remains the same regardless of temperature. Yes, temperature lighting mostly visibility के लिए हम use कर रहे हैं. Heating system के लिए अलग से we can have a better lighting, वो लुमेंस ज्यादा होगा। एंड वो कंफाइंड एरिया में हम ब्रूडिंग के लिए टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, स्पेशली इन द कोल्डर रीजन्स ड्यूरिंग विंटर्स, टेम्परेचर इज स्लाइटली डिफरेंट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इनसाइड द शेड फॉर ब्रूडिंग। चूजा हो गया, वो बॉडी अपने आप बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता है, एक्सटर्नल वार्मथ देना चाहिए एटलीस्ट 20-21 डेज ऑफ ब्रूडिंग पीरियड। द टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर टू लोएस्ट टेम्परेचर वो रेगुलेट करना पड़ता है, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड ब्रूडिंग। ब्रूडिंग के लिए अलग से सिस्टम्स बनाते हैं। Brooder is a different technology component altogether. Shed lighting will remain the same. LED lighting will remain the same for per square feet area, regardless of the temperature. Um, एक चीज छोटा सा शेयर करेंगे मैम। अभी हाँ ब्रूडिंग हाँ। का बात कर रहे थे और सोलर ब्रूडिंग का। हमारे यहाँ ये भी पायलटिंग हुआ था, ये ब्रूडिंग को लेकर के। करेक्ट। तो लगभग 4 पैनल थे, 4 बैटरी थे। ये 2 जगह हमारे 2 साइड पे हुआ था। क्योंकि कुछ दिन तक तो लगभग ठीक था, लेकिन फिर क्या होता है, जो ब्लोअर है, ब्लोअर सीधा हीट फेंक रहा है, वो स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो चिक्स जो है हमेशा ब्लोअर की तरफ ही भागते हैं। तो करेक्ट कहीं ना करेक्ट। कहीं फेलियर हुआ है। बट इसमें और कुछ टेक्नोलॉजी ला करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वो तो वो हम एक्चुअली ब्रूडर के पास
ब्रूडर के ऊपर हम काफी सालों से काम कर रहे हैं। बहुत बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, कभी तो बॉक्स बनाया था, कभी गोल शेप में हमने हीट ट्रैप करने की कोशिश की थी, अभी भी चालू है। हम अभी भी वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं, कोई अच्छा सा ब्रूडर बना सके। मार्केट में जितना अवेलेबल है वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करने वाला है। कभी वो ये चूजा एक साथ वो ब्रूडर की तरफ भागता है, तो उसमें भी एक के ऊपर चढ़ के वो मोर्टेलिटी होता है, वो सब चीजें है। तो वी आर ट्राइंग टू कम अप विद एनर्जी एफिशिएंट बट हीट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करने वाला ब्रूडर के ऊपर काम कर रहे हैं। सक्सेसफुल अगर टेस्टिंग हुआ तो हम डेफिनेटली आपके साथ रिपोर्ट्स रिजल्ट्स शेयर करेंगे। And Mr. Anthony, definitely we will share the presentation and the video link and everything over an email in the same email trail. Thank you so much. Thank you so much, Purnima ji, or thank you, Anupam ji, Supriya, my colleagues here, and everybody from the SELCO Foundation team for joining us today to discuss climate smart poultry solutions. We will get back to you with yet again another solution on next Tuesday. Thank you so much. Thank you. Thank you, Didi.